Welcome to you all. Today we'll be learning about and discussing about cases. Our previous lectures were about verb and types of verbs, wherein we learned that verb is broadly categorized into two types: finite verb and non-finite verbs. Finite verbs change according to the three parameters, while as non-finite verbs do not change, they never change, right? In non-finite verbs we have the other types of it. Gerund is one type of non-finite verb which never changes. Gerund always functions as noun. Then comes infinitives. Infinitives also function as noun, but they take the form of 2 plus v1, while as gerund takes v4. Okay, and the last type of it was perfect participles, right? Participles function as adjectives, right? They use two forms of verbs, v3 and v4, right? When it is v4 functioning as adjective, we call it present participle. When v3 functions as adjective, we call it past participle. Then perfect participle having two segments in the sentence. One segment is having plus v3, then the other segment is having v2 only. Having said that, I slept. Slept is v2. Okay, having eaten my dinner, I slept, right? Having finished my work, I went out. So I'm using v2 in another portion of the sentence, right? After comma. This is all done. Today we are going to learn about cases, right? There are different types of cases which we should be aware about, and these cases will help us a lot while dealing with tenses and narration and all of the other topics of grammar, right? Otherwise this is not directly mentioned in the syllabus, in your syllabus, right? So we have been discussing these all because these are the steps of the ladder which will definitely let us reach to our main topics of grammar. Okay, so when I talk about cases, we will be specifically talking about the cases of some of the pronouns and one noun. Okay, when I write one general name of noun, that will include all of the other nouns. Okay, so let's write. You will be drawing lines like this. See, I will write cases. Let's write subjective case, for instance. Subjective case. It has another name, nominative case. Nominative case. अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस आप सुनते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से. Let me draw a line like this. Subjective case, and we may also call the same as nominative case. इसमें मैं लिखूंगा I, we, you, he, she, it, noun, and they. Right? I is pronoun, we pronoun, you, he, she, it, and they. They're all pronouns. Okay? Except this one. This is noun. Now when I say noun, it includes all of the other naming words. All of the nouns it will include, right? Why I'm clarifying this? Because आगे जाके हमें समझ आएगा कि मैंने ये बात क्यों बोली. ये एक नाउन नहीं है, ठीक है? ये बहुत सारे जितने भी नाम है दुनिया में, नेमिंग वर्ड्स हैं, ये वो सारा रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन एक भी हो सकता है ना, नाउन कैन बी सिंगुलर और कैन बी प्लूरल. तो ये वाला वर्ड हमें दोनों रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? वो आगे जाके इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी हाउ दिस नाउन वर्क्स. ओके, right now we are talking about subjective case. So first of all we need to understand what is a subjective case or nominative case. In a sentence structure we always have two parts or three parts in a sentence. I was telling you, if you remember in my first lecture, about the definition of a sentence. किसको बोलेंगे sentence हम? बचपन में सुना था group of words that give meaning, है ना? Group of words that gives us meaning is a sentence. लेकिन आज आप प्रोफेशनल और डेफिनेशन याद रखेंगे कि सेंटेंस बोलते किसको है, राइट? और बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है वो जो बचपन में हमने याद किया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स द हैविंग मीनिंग, उससे भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है? सेंटेंस किसको हम कहते हैं? जिसमें सेंटेंस किसको कहते हैं?
नंबर 1 जिसमें सब्जेक्ट हो, क्या हो? सब्जेक्ट। सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो दिस इज अ मेन पार्ट और इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट विच वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है? एक हो गया ये। दूसरा है हमारा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज, कैन यू गेस? मेन वर्ब, ठीक है? ये दो चीजें जहां भी है ना, दैट सेंटेंस, ठीक है? फिर आप सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए, टू गिव इट अ सेटिस्फैक्टरी मीनिंग, वी से ऑब्जेक्ट। अदरवाइज ऑब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सेंटेंस में। टेक्निकली वी ओनली नीड 2 things, सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब, ओके? इफ आई एम राइटिंग आई वॉक, टेल मी whether this is a sentence or not? हाँ, this is subject, this is main verb, हो गया ना? दो ही चीजें चाहिए हमें सेंटेंस के लिए, दो चीजें जहां भी देखो आप सेंटेंस बोलो इसको, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिखूं आई एम, टेल मी, इज दिस अ सेंटेंस? व्हाई? दिस इज अ वर्ब। डोंट टेल मी अबाउट सेंस, टेल मी, गिव मी टेक्निकल आंसर। आई एम, दिस इज सब्जेक्ट, this is verb, this is not main verb, okay? Otherwise this is a verb, this is additional verb, okay? So we need subject and a main verb. So see, how do we write sentence? I'll write a full sentence here. I write a novel. Can you identify the subject in the sentence? I, okay. I is subject. Main verb? Main verb is right, okay. What is this? A novel? Object. I'm going to explain subjective case, okay? Keep this in mind. In English, when we write a sentence, we have 2 portions in a sentence. 2 parts in a sentence. One part which is left side of the sentence is containing a subject. लेफ्ट साइड है, यहां पे सब्जेक्ट है हमारा, राइट साइड से क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ड्स जो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगे, सब्जेक्ट की साइड से आएंगे। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है आई की, या सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है यहां से, लैंड, और ये लैंड है किनका? किसका? ऑब्जेक्ट का। जो भी चीजें फॉल करेगी आई के सब्जेक्ट के साइड से, वो नहीं हम बोलेंगे ये सारे सब्जेक्टिव है। मान लीजिए हमें आता है यहां पे ये स्क्वायर, इसमें सब्जेक्ट के साइड से, हम बोलेंगे ना ये सब्जेक्टिव है, बोलेंगे हम। अगर मैंने यहां से ये ट्रायंगल बनाया, कहां से आया ये? ऑब्जेक्ट के साइड से आया ना। समझ आ रही है बात आपको? इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा लिखे जाते हैं सब्जेक्ट के साइड से, ठीक है? और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड से आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी? Subjective case or nominative case is a case where we have to write or bring that particular word only from the subject side. ठीक है ना? I है ना, I अभी किस साइड से आया है? सब्जेक्ट के साइड से आया है, और यहां से ये सारा ऑब्जेक्ट के साइड से आया है। What if I want to bring the same I from object side? Make a sentence where I have to shift this I to object side. And all has been written. हाँ, you are correct. Should I do this? You have to bring I from the object side. Give me a simple sentence. All has been written by me, or I can change I to me. Let me write a very simple sentence. You love I. Yeah, it's simple. And Okay. Is this correct sentence? Correct है? नहीं है ना? क्यों? क्या फॉल्ट है इसमें? You love I. हाँ? You है सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है? वो जो I है ना, वो कहां से आया था? वहां सब्जेक्ट साइड से आया था ना। यहां पे कहां से आया? लग रहा है गलत है, ये नहीं आना चाहिए था इस साइड से, ठीक है ना? आई को जब आप फोर्स करोगे ना, भाई आ जाओ इधर साइड से, आई अपने बदले सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है ना? इट विल रिप्लेस इट्स ओन सेल्फ
with me. यानी I itself is a subjective case. It will always come from the subject side. If by any means you force the word I to come from the object side, it will give it substitution. It has its partner. ये इसको बोलेगा जा मेरे बदले, ये अपने बदले खुद नहीं आएगा बल्कि मी को भेजेगा. क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है खुद सब्जेक्टिव, हमेशा उधर साइड से आएगा. इस साइड से लाने के लिए हमेशा ये यूज करेगा. Do you understand? So this is subjective case. Words which always are used from the subject side. What could be objective case then? If subjective case is bringing any word or writing any word from only subject side, objective नहीं, उसका उल्टा होगा. Any word always written from the object side. ठीक है? Subjective case and objective case. Let me go back. These all words are subjective, nominative, which means they will be used from the subject side. Right? Some of them have exceptional cases. Right? I'll be highlighting after some time. But these words are always used in subjective case. Okay? From the left side of the sentence. Some of the words are used from subject side as well as object side. They are subjective as well as objective. This will clear when I write this one. Objective case. Objective case of I, objective case of we, then you, he, she, it. These are all subjective cases. I'll have to bring them in the left side of the sentence. But if somebody asks me what is the objective case of I, that's me. Do you understand? जैसे मैंने अभी सेंटेंस में बोला, ये राइट साइड से कभी नहीं आएंगे. कुछ है इसमें से जो उधर भी आते हैं इधर भी आते हैं, जो मुनाफिक है. ओके, उधर से भी आएंगे, इसको भी राजी रखेंगे, इसको भी राजी रखेंगे. कुछ है उसमें जो बहुत कंजर्वेटिव है, वो नहीं आएंगे, वो बोलते हैं यार हमें नहीं आना है, हम किसी को और को भेजेंगे. सो वी से ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी. कैन यू गेस व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी? No, there is already here. Shall I write a sentence? We. Let me write a sentence. If I say Us. we hate you, ठीक है ना? सेंटेंस ठीक है? अगर मैं लिखूं you hate we, अब बताओ ठीक है? Correct. Us. So what is the objective of we? Us. So objective of we is us. What should be the objective of you? I see you. Objective case में आया ना? You see me. Subjective में भी आया. It will remain same in subjective and objective case. The same है. You. What about he? What is the objective of he? Him. Good. What about she? Her. What about it? It's same. Okay? Noun will remain same. Noun. I'll give an example of noun. What about they? What about they? What is the objective of they? Objective पहले समझ आया? Them. हमेशा राइट साइड से लिखना है हमें. ठीक है? Them. A very interesting question I'm going to ask. What is the plural of I? I is singular or plural? No. I is singular or plural? Singular. It's singular. मैं. A girl can say मैं. A boy can also say it. So this is singular. But what is the plural of I then? We. ठीक है? You का क्या plural है? ये मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा. I have to tell you a point. Can you tell me what is the plural of he? He. No? What is the plural of he? Okay, leave. It's tough. What is plural of she?
दे नहीं हो सकता. Yes, correct. You are making good guesses. So guess. ही का भी, शी का भी, इट का भी और प्लूरल नाउन का भी प्लूरल है दे. सिंगुलर नाउन का प्लूरल क्या है? दे. ठीक है, बात समझ आ रही है? ही का वो एक लड़का, वो एक लड़की, वो सारे लड़के, वी से दे. ही इज अ बॉय, दे आर बॉयज. शी इज अ गर्ल, दे आर गर्ल्स. तो आई एम यूजिंग दे, राइट? सो प्लूरल ऑफ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स आर दे, जो मैंने यहां पे लास्ट में लिखा हुआ. क्लियर? सो दे सी देम इज करेक्ट. दे सी देम, ठीक है ना? उन्होंने उनको देखा, राइट? दे स्लैप देम, ठीक है ना? अगर मैं लिखूं देम स्लैप दे, गलत है. क्यों गलत है भाई? व्हाट इज द टेक्निकल आंसर? इफ आई राइट, if I write if I'm writing they slapped them, करेक्ट है ना? अब मैं इसको चेंज करता हूं, them slapped they. बताओ क्या फर्क है? विच वन इज करेक्ट? वाई? बिकॉज इट मेक्स सेंस, है ना? लेकिन टेक्निकल आंसर क्या है? ये है ना सब्जेक्ट के साइड से अपने, दिस इज सब्जेक्टिव केस. द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दिस वर्ड इज देम. और ये मुझे हमेशा इधर साइड से लिखना है. इसको मैं इधर नहीं ला सकता हूं. दिस इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे. मुझे सब्जेक्ट में लाना है दे. अंडरस्टूड? और फिर बाद में ये क्यों गलत है दे? बिकॉज दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव केस. द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे इज देम. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स गो बैक. ओके, subjective case and objective case of the words are clear, right? Am I right? Okay. Now we'll be discussing a very interesting, not this one, after this one we're going to learn something very new. Singular. No, let me write this one. I'll give it a name. Okay, do you remember the word I told you used for whether an object or the person is singular or plural? We discussed it in the class. I said that term in which we include whether an object is singular or plural. What is the term for that? Which represents singularity and the plurality of the word. The word starts with N. You don't remember anything. The word starts with N, ends with R. Narrations? No, sorry. What's the question? How we That term in which we discuss whether an object is singular or plural. What is the term for that? Which refers to singular or plural things. What is the term? The word starts with N, ends with R. We have discussed, by the way. Can we play a game here? Huh? Sorry? Can we play a game? You have 3 options only. Run. If your answer is correct, you have to tell me the letters, one letter at one time. If your letter is correct, I'll fill the blank with the correct letter. If it is wrong, you lose one choice. One option, okay? These are your turns. 3. Come on. I said 2. Yeah, I know. You have to tell me the letter. One letter. If that is correct, I'll add that in the blank. A. Galat. M. Come on.
Guess the letters. You don't have to guess the word. Guess the letter. I? Nah. O. O. Huh? O. Shall I consider this? Yes. Huh? then you lost all of the choices. You lose it then. Yes, please tell us. So Uh-huh. write it. Our ma'am said it. Number. We discussed it. When number word comes in English, it represents singularity and plurality of the word. I give you an example. I said, if I am writing boy and I tell you what is the number of the boy? Singular. If I am writing boys, what is the number of boys? Plural. It represents whether an object or anything is singular or plural. We say number. ठीक है? दोनों बच्चे सिंगुलर और प्लूरल किसके बच्चे हैं? नंबर के. You will check, cross check my video. Yes, sir. You'll see that. So I'm writing here number. What is the number of I? Singular. Very good. What is the number of we? Plural. Great. I have scholars in front of me. You. Singular. What do you think about you? You can be singular or plural both. Can be both. Yes, it is both. You can be used for one boy, one girl, one object. Can be used for many boys. You are a boy. You are boys. Okay. So the number of you is both. What about he? Singular. Very good. What about she? Singular. What about it? It is singular. Singular. What about noun? See, if I categorize or specifically write one name, for instance, I will write my name. Okay, that name is singular. If I'm writing all of our names, that's plural. Okay, so how will we consider this one? कैसे इसको हम यहाँ पे समझेंगे? हम लिखेंगे both इस वजह से क्योंकि नाम एक भी हो सकता है, नाम बहुत सारे भी हो सकते हैं. In that way, I'm writing both. Otherwise, if I specifically write any name, that is singular. ठीक है ना? I'm writing both here. So noun can be a name of a one word or one thing, one person, can be names of thousands of people. They, plural. अभी समझ आया नंबर क्या होता है? हाँ, सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है. Then comes very interesting one. Gender. Gender. So before this gender, let's discuss something which can be easily done. Let's talk about possessive case. I hope you know what is a possessive case. What do you mean by possessive? Possession? What is possession? Belonging. Somebody owning something. Okay? This pen belongs to me. Those words with which we show possession of something or somebody. हम किसी की कोई चीज किसी की बोल रहे हैं. हम ownership दिखा रहे हैं. What is the possessive case of I? हम कैसे इसको possessive case बनाएंगे? हम दिखाएंगे दूसरे को नहीं मेरा है. Let me simplify this. तुम्हारा, मेरा, उसका, उन सब का, हम सब का. This shows possession. दिखा रहा है ना ownership. So what is the possessive case of I? Easy. And sorry, do we have to provide a sentence or something? A word. Like we said, the objective of I is we. What is the possessive of I? Easy. I gave the answer. I gave the answers. My. Yeah, it's Mera. So possessive of I is my or mine. What is possessive of we? Come on. Our. You is R हम कहते हैं. You? Your.
What about he? His. His. Very good. She? Her. It? There. फंस गए. बताओ दे का पहले. They का. There. हाँ, there. It. Dear pen. Yes, yes. Yeah. Shows possession, right? What do you think about it? Because why I left both of the two? Because they have same rule. I guess it will be same. What same? Do you mean we don't have to make any changes? If I am showing possession using my, mine, our, your, what can we do with this man? I have to show possession with this name. And You have do to you? use apostrophe s? Yes. Whenever we write names and the word it, we will have to use apostrophe s. Understood? So what will I do? Apostrophe s. Ramiz's class. This shows possession. What do we do with it word? Same rule applies there. It's. Understood? Whenever we use apostrophe s, see, when I was a child and my teachers used to teach me, they would say apostrophe s. I was always confused, what is this? Apostrophe s, right? We never knew that it is apostrophe, then s is something different letter, right? We used to remember this. Ma'am ne bola apostrophe lagao. ठीक है? This is punctuation mark. This is apostrophe. And this is s. ठीक है? सिंगुलर नाउन के साथ आपने पहले apostrophe डाला, फिर बाद में s डाला. क्लियर हो गया? इट के साथ पहले इट लिखा, फिर apostrophe डाला, फिर s लिखा. अब अगर हो गया प्लूरल नाउन, हम क्या करेंगे? देखो, अगर मैंने लिखा, अब बहुत सारे रमीज है, छोड़ो वैसा नहीं करेंगे हम, ये फिर अपने साथ हो गई इंसल्ट. मैं लिखूंगा नाम, लेट बी वेरी इजी, बॉयज है ना, प्लूरल है, सिंगुलर में लाता हूं पहले, बॉय apostrophe s shows possession. Okay, possessive case of noun. Remember, if I'm doing with singular noun, putting apostrophe then s, what should we do with plural nouns? S then. No. फिर s नहीं लिखना है, S के बाद. खाली apostrophe, फिर s और नहीं. then बस इतना ही. दूसरा s नहीं लिखना है. नहीं लिखना. BOYS. हाँ? Are you sure? Yes. You're sure? Yes. You're sure? Yes, okay. She's correct, by the way. See, with singular nouns, we'll have to use apostrophe then s. But if it is plural noun, we'll have to use only apostrophe here. Okay? और कुछ नहीं करना है इसके साथ. Boys, shirt. ठीक है? ऐसे ही करना है. Now, with plural noun, we write apostrophe like this. And this rule applies with any of the plural words. Do you understand? Yeah. Okay. Noun is clear? And singular plural with nouns is clear also, right? It is also clear. See, now it would be it, then apostrophe, then s. It would be noun, any name, singular word, then apostrophe, then s. We are talking about singular here, but if it's plural, we'll write nouns, then apostrophe. I hope this is clear. So we talked about subjective case, objective case. Objective case को एक और नाम है accusative case. Accusative, huh? Okay, then comes reflexive case.
ये आपको लग रहा होगा ना आज रिवील हो रहा है कुछ, है ना, नया. Reflexive case. What is reflection? You told me word back. You didn't define it. Okay. What is reflection? Reflection of something which is reflection. That defines something. Reflexive. Give me a simple definition of reflection in terms of light. Same जो होगा. Coming back of the light is reflection. Okay? Coming back of the light is reflection. Reflection. When you stand in front of the mirror, you see your reflection. Okay? That is actually light performing its task. Okay? So, reflection is seeing your own self. Getting back, you know, you have one thing from the one side and the same thing from the other side. This is reflection. Shows reflection. That same word which has been used from left hand side of the sentence and from the right hand side of the sentence. Reflection. Okay? For instance, if I'm writing, I am a teacher. Okay? I love to teach. I love my teaching style. Now this my reflects me. I love my. My word is reflecting me. ओके बट यहां पे आपको कैसे याद रखना है, रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इसको एक और नाम भी है, दोनों का काम अलग अलग है. व्हेन वी डिस्कस प्रोनाउंस विल बी डिस्कसिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन. दोनों नाम इधर रखेंगे क्योंकि माई सेल्फ दोनों में यूज होता है. ठीक है ना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि इसमें आप अपनी ही बात कर रहे होते हो. यू यूज टू प्रोनाउंस. मुझे पता है अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया है. यू यूज टू प्रोनाउंस. एक प्रोनाउन आपका और जो दूसरा प्रोनाउन आप यूज करते हैं ना वो भी आप ही के बारे में. दैट रिफ्लेक्ट्स यू, मी द सब्जेक्ट. ठीक है ना. ऐसे कैसे याद रखोगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और दोनों एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का दोनों का सेम स्ट्रक्चर है. दे यूज एनी वर्ड एंडिंग विद सेल्फ. सेल्फ. व्हाट वुड बी द रिफ्लेक्सिव केस ऑफ आई? माई सेल्फ. वेरी गुड. माई सेल्फ. शॉर्ट में सेल्फ वाले वर्ड्स को आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव. लेकिन इसका यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है. जब ये खाली दिखाएगा आपको उस सेंटेंस में, दैट इज रिफ्लेक्टिव. अगर स्ट्रेस डाल रहा है सेंटेंस में, दैट इज एम्फैटिक. ठीक है. प्रोनाउंस के टाइम पे विल डिस्कस दिस. राइट. लीव दिस राइट नाउ. व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव ऑफ वी? आर. नहीं आएगा सेल्फ भाई. सेल्स. बिकॉज दिस इज प्लूरल. सेल्फ इज सिंगुलर, सेल्स इज प्लूरल. व्हाट अबाउट यू? योर सेल्फ. अगर ये एक बंदा है, योर सेल्फ. बहुत सारे लड़के हैं तो योर सेल्फ. ओके. ही हिमसेल्फ. गुड. व्हाट अबाउट शी? हर सेल्फ. इट इटसेल्फ. नाउन. नाउन अगर मेल है राइट या फीमेल है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेल्फ लगाओगे. इन दोनों नाउन का सिंगुलर का, अगर सिंगुलर नाउन मैंने यूज किया है, हिमसेल्फ लगाओगे. लड़की है या फीमेल है, हिमसेल्फ हर सेल्फ लगाओगे. ठीक है. अगर प्लूरल है, अभी बोलूंगा, यहां पे आप या तो हिमसेल्फ लगाओगे और यू यूज हर सेल्फ. वेरी गुड. देमसेल्व्स. अगर एक लड़का है, हिमसेल्फ. लड़के का नाम, एक लड़की का नाम है, हर सेल्फ. अगर बहुत सारे लड़के लड़कियों का नाम है, देमसेल्व्स. है ना. आसान, इजी है ना. एनी वर्ड एंडिंग विद सेल्फ और सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके. द लास्ट ऑफ दिस इज, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल दीज डेज, जेंडर. जेंडर जब हम बात करते हैं ना, दिस इज वेरी डिबेटेबल नाउ, बट वी डोंट हैव टू गो टू दैट डिस्कशन. जेंडर. जेंडर और सेक्स. मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मे बी सम पीपल मे से दैट दिस इज द ओरिजिनल वर्ड, बायोलॉजिकल बीइंग. ओके.
दिस जेंडर वर्ड इज सोशल कंस्ट्रक्शन, समाज में जेंडर बनाया गया है, ठीक है। अदरवाइज बायोलॉजिकली व्हाट यू वर, दैट्स डिफरेंट। जेंडर को हमने बनाया है, वी हैव गिवन रूल्स टू पीपल, ठीक है। औरत को ऐसे काम करना है, मर्द को ये काम करना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड, डिफाइंड बाय द पीपल इटसेल्फ। जैसे मैंने परसों बोला था, इफ यू रिमेंबर, व्हाई डोंट वी कॉल दिस पेन अ डॉग? It's a social construction. In society, they have created or given a name to this object or instrument, that this is something, used for the writing. Let it be pen. There is nothing like pennish in it. Now, this is a social construction. समाज में बना है भाई, बना है, हम कुछ नहीं, there is no logic in it. ऐसे ही when it comes to gender, gender is a social construction. लोगों ने बनाया है। सेक्स क्या था, बायोलॉजिकली क्या था, ये दैट इज समथिंग डिफरेंट, ओके। हम यहां पे कर रहे हैं बात जेंडर की, या आप बोलिए सेक्स की। हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं जिस पे हम सारे लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, ये वो जेंडर नहीं है। इंग्लिश के अपने जेंडर्स हैं, ओके, ये उनमें नहीं जाता है। इंग्लिश में कितने जेंडर हैं हमारे पास? कैन यू गेस? 2। हाँ, मैस्कुलिन, ठीक है, यानी मेल, मैस्कुलिन। सेकंड, वेरी गुड, फेमिनिन, ऑपोजिट टू मैन, वेमेन, ठीक है ना। ये दोनों समझ है ना, ये बहुत इजी है समझने के लिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बॉय, बताओ इसकी एग्जांपल, गर्ल। बताओ भाई मैन, वुमन। बताओ भाई हम बच्चों को नहीं बोलते हैं टाइगर, टाइग्रेस, लाइन, लाइनेस, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट जेंडर्स हैं। एक हमें यूज होता है मैस्कुलिन के लिए, दूसरा फेमिनिन के लिए, फादर, मदर। ये वर्ड एंटोनिम में भी आप, जो आपका एक कंपोनेंट है ना सिलेबस का, वर्ड एंटोनिम एंड वर्ड सिनोनिम, ये उसमें भी आएगा आपको, ठीक है ना। ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, ठीक है ना, उसमें भी आएगा, यहां पे भी आएगा। ये दोनों तो क्लियर है, आसान है, हम बहुत इंटेलिजेंट है। तीसरा, यस, एक तो तीसरा भी है, एक और भी है। हमारे देखो क्या होता है, दिस इज अ ट्रिक ऑल्सो प्लेड इन द एग्जाम एंड इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। whenever somebody asks us a question which which is very sensitive, हमारी सोच उधर ही तंग हो जाती है। मतलब आजकल के टीनेजर्स के साथ क्या हो जाता है, व्हेन आई टॉक अबाउट लव, हो गया, सिमट गया दिमाग इनका इधर ही, है ना, ऐसे ही होता है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, बस इसके बाद कुछ नहीं है, आप मुझे नहीं मानना, ठीक है ना। अब जिस तरीके से मैं अभी बोलूंगा ना क्या जेंडर, आप हाँ ये तो था यार, ये तो इतना बेसिक है। अभी कितना आप पता नहीं नेगेटिव भी सोचते होंगे, पता नहीं क्या होगा यार, ठीक है ना, क्यूरियोसिटी अभी है। बहुत ही आसान है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं दैट आर यूज फॉर मैस्कुलिन एंड यूज फॉर फेमिनिन। ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई जेंडर ही नहीं है। बोला मैंने एक तरीके से, अब देखो कैसी अच्छी डेफिनेशन है। ऐसे वर्ड्स जो ना मेल के लिए यूज किए जाते हैं ना फीमेल के लिए यूज किया जाता है, उनका जेंडर है ही नहीं, राइट? दे आर अबाउ द जेंडर्स। डू यू गेट द पॉइंट? कैन यू गेस एनी वर्ड विच डजंट हैव एनी जेंडर? बाय द वे, व्हाट इज द नेम फॉर दैट? न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूटर is the gender, I'm sorry, neuter. न्यूटर, न्यूटर होता है न ये न वो। ऐसे वर्ड्स जो न मेल्स के लिए पर्टिकुलर है न फीमेल्स के लिए पर्टिकुलर, उनका कोई जेंडर है ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, अभी आप बोलोगे अरे ये तो इतना आसान था, चेयर। चेयर का कौन सा जेंडर है? इट इज अ नेम, इट्स अ वर्ड विच डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी जेंडर। जेंडरलेस हैं ये लोग, ठीक है ना। हम, मेरा ये स्टाइलस मेल है फीमेल है, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है ना। टेबल,
Understood furniture, locker, understood bulb, board. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई जेंडर है ही नहीं. वी कॉल दीज वर्ड्स एज न्यूटर जेंडर, राइट? अच्छा, कैन यू गेस, बिकॉज दिस इज वेरी रिलेटेड टू कॉमन सेंस. Then again, when you said it is, when you wrote the sex, like, or you wrote the gender, when you say sex, it's biologically defined. Then how come we define these chair, stylus, all these neuter? If we are following biological definition here. I'm not following biological definition. I'm not following because then I have to prove it. I can't prove it. Yeah, that's Okay? I'm using gender, right? Which is a social construction, right? Why did I write this word? Because this is something original. Because this definition defines only these two things. Yes, exactly. No, This word. Yeah, I know. Yeah, you can that modern. sex can be anything else. That has been. Okay, not only male and female. Yeah. Okay. That's a different concept, but I got your point. conventionally we can like define only. Even though even scientifically we are able to define only these two. Let's not develop into that discussion. You put a full stop at that. Okay. End of discussion. Okay, end of discussion. Although this is debatable, okay. Yes, basically, there are a lot of people who say there is only male and female. Okay, but then we have exceptional cases. Neuter is any word which is neither used for males nor for females. Then comes another one, common. Used for both. Any English word which can be used for males as well as for females. जो मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होगा, औरतों के लिए भी इस्तेमाल होगा. ये इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता है. ये बोलता है भाई करो मुझे यूज, जो जिसको करना है करो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको. कॉमन में कौन कौन आते हैं? जैसे टीचर. अब टीचर कैन बी अ मेल टीचर, इट कैन बी अ फीमेल टीचर, राइट? इफ आई टेल यू व्हाट इज द जेंडर ऑफ टीचर? It can be. कॉमन. So, जेंडर इज कॉमन. डॉक्टर. अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो इट्स अ कॉमन नेम, राइट? बियॉन्ड दिस जेंडर. टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, क्लाइंट, पेशेंट. ये सारे नाउन्स है ना? ये सारे ऐसे नाउन्स है जिनका कोई जो दोनों के लिए यूज होता है, दोनों जेंडर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर्स. स्कॉलर, रिसर्चर, राइट, मैनेजर. ये सारे ऐसे हैं जिनका कोई जेंडर है ही नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है. राइट? इज दिस क्लियर? इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड. Okay, let's come back. What is the gender of I? Among the four, you have to tell me which gender is used there when I say I. Good, common. क्यों? I am a boy, I am a girl. दोनों ने यूज किया ना. We, common. What about you? Once again, common. He, masculine. बचपन में पढ़ते थे, मजा आता था. मैस्कुलाइन. अच्छा, फेमिनाइन भी नहीं बोलते थे, फेमिलाइन बोलते थे. हाँ, नाइन भी नहीं बोलते थे, फेमिलाइन बोलते थे. फिर बाद में पता चला यार इट्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. अच्छा, हमारा ये जो वर्ड है ना, इसको बड़ा एवोल्यूशन हो गया. इस वर्ड को, ये जो वर्ड है ना, बहुत एक्सप्लॉइट हुआ है ये बेचारा. पढ़ो. इट्स ई बाय द वे. हाँ, ई. मेरे ज़माने में इसको पढ़ते थे टोटो टॉयज. ठीक है, टोटो टॉयज. आपके ऐसे ही होता था? ऐसे ही पढ़ते थे ना, टोटो टॉयज. फिर एक ज़माना आया, बोला नहीं भाई टोटो टॉयज भी नहीं है, इट इज़ टो टॉयज. टो टॉयज ऐसा बोला गया. फिर एक और एवोल्यूशन इसका स्टेज आ गया, बोला नहीं टो टॉयज भी नहीं है, अभी टॉट्स है. Even जेंडर बेस्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन है. मतलब जेंडर बेस्ड में जैसे आपने कहा ना, टोटाइज, ये एक जेंडर के लिए यूज किया जाता है, एंड दिस अदर टॉट्स. या टॉट्स इज यूज्ड बाय अनदर जेंडर. ओके, लिंक टू जेंडर. I was recently watching one of the videos which was related to this. ओके, टॉट्स बेचारा बहुत ही एक्सप्लॉइटेड वर्ड है.
टॉट्स पढ़ना है हाँ Yeah. खैर तो आई वॉज टेलिंग यू he is masculine, she not nine ना feminine yeah what is the gender of it It can be both. it's both, it's common. What do you think about noun? No, it's not. If it is a name of a boy, right, then it is masculine. If it's a name of a girl, feminine. समझ आई बात? You could either If it is a if it is a name of an object, a chair, हो गया neuter. ठीक है? If it's a name of something which is used for both males and females, teacher जैसे मैंने अभी बोला, वहाँ तो ये सारा है. ठीक है ना? All, used for all. What about they? It's common. They are boys, they are girls. So we talked about subjective case, objective, number, possessive case, reflexive case, and gender. Remember, this will be discussed the moment we start discussing pronouns. Okay? With this, we are done with the cases of the pronouns. I hope this is clear to all. See you in the next lecture.